Hello everyone. So our topic for today is chapter number 7, human settlements. So today in this chapter we will see human settlements of Brazil and India. In the previous chapter we have seen the population, right? Population का हर एक aspect हम लोग ने देखा था. Remember the population of Brazil and every aspect, life expectancy. फिर हम लोग ने population growth rate, sex ratio सब देखा था. सो इन दिस चैप्टर वी विल सी ह्यूमन सेटलमेंट्स कि ह्यूमन वहाँ पे कैसे रहते हैं एंड व्हाट आर दिस, मतलब बेसिक कैसे रह रहे उनका सेटलमेंट्स हम लोग देखेंगे. तो इफ़ यू सी द फर्स्ट पिक्चर केयरफुली, थोड़ा नज़दीक जाके जूम करके अगर आप देखोगे तो वहाँ पे देर आर प्लेसेस, नेम्स ऑफ प्लेसेस गिवन एंड ये जो डार्क ब्राउन स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं, वहाँ पे लोग रह रहे. सो मतलब बेसिकली क्या हुआ, कम जगह पे ज़्यादा लोग रह रहे. सी द डार्क ब्राउन स्किनिश स्ट्रक्चर जो है ना, दैट इज़ द सेटलमेंट. सो द फर्स्ट पिक्चर फिगर 7 पॉइंट है, वहाँ पे प्लेसेस छोटा है, कम स्पेसेस में ज़्यादा लोग रह रहे. एंड इफ़ यू सी फिगर 7.2, सो प्लेस फिगर 7.1 बी सॉरी. सो अगर आप वापस उसको जूम करके देखोगे तो प्लेसेस दूर दूर है एंड लोग भी दूर दूर रह रहे. ओके, तो फर्स्ट पिक्चर में कैसे था, कम प्लेसेस में ज़्यादा लोग रह रहे एंड सेकेंड में दूर दूर लोगों पे, दूर दूर जगह पे लोग रह रहे. सो द फर्स्ट वन इज़ नोन एज न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स. ओके, मतलब क्या, कम जगह में ज़्यादा लोग रहते. एंड द सेकेंड वन इज़ अगेन नोन एज डिस्पर्स सेटलमेंट. डिस्पर्स मतलब क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड सेटलमेंट. समझा? So study the two types of settlement patterns in India given in figure 7.1a and 7.2b. Identify the types of settlements. I have already answered. The first one is nucleated settlement, whereas the second one is dispersed settlement. Which one is a nucleated settlement and why? Settlement and why? So again you have to say, because in little area more people are living. Which one is a dispersed settlement? What could be the reason behind it? And can you guess in which region are this settlement located in India? So in India हम लोग आज ही देखेंगे चैप्टर में, so we will understand it. Fine. In India, we can see a variety of settlements. Pattern give the variety of climatic factors, availability of water, slope of land, and level of development. Right? So हम लोग ने ऊपर क्वेश्चन में देखा, थर्ड क्वेश्चन में देखो that what could be the reason behind it. So there are various reasons, right? It can be climatic factors, availability of water and other resources, availability of land, the level of development on which, like the level of development which is done in that place, right? हमेशा लोग अपना फैसिलिटी देखते हैं. एक एरिया है जहाँ पे आपको कंटिन्यूस सब सप्लाई है एंड एक एरिया है जहाँ पे there is no supply of resources or no availability of resources. Then which area will you choose? The one which has a lot of facilities, right? So all of these factors do affect the level of human settlements. कि जितना लोग वहाँ पे रह रहे वो ये सारे factors के वजह से affect करता है. Nucleated settlements are found throughout the plateau region of Narmada Valley, paddy lands in Bihar, UP, Vindhyavan Plateau and several others cultivated parts of India. तो देखो अपन को लास्ट क्वेश्चन था कि कैन यू गेस इन विच रीजन आर दिस settlements located. So you can write that nucleated settlements are found in plateau region of Narmada Valley. कि नर्मदा वैली का जो एरिया है वहाँ पे we have paddy lands in Bihar, फिर Vindhyavan, UP, and all of these places we have nuclear settlements. On the other hand, dispersed settlements are found in tribal parts covering central parts of India, eastern and southern Rajasthan, Himalayan slopes, and land with dissected and uneven topography. कि वो कहाँ पे होता है जहाँ पे uneven topography होता है, resources are not available properly. In such places we find dispersed settlement. Think about it.
Tell whether settlements shown in figure 7.1a and b are urban or rural. So the places actually are not clearly visible because ये images उन लोग ने basically these are satellite images जो इन लोग ने Google पर से निकाले, and that is why the name of places is not like it's not readable properly. Let's recall some amenities and facilities are given here. Tick right in the relevant column and complete the table on the basis of their presence in urban and rural areas. And write 5 sentences on each of the following examples. So all of the resources which are given, and you need to make sure like आपको टिक करना है कि वो villages and cities में available है या नहीं. So petrol pump city में it is available, villages में you can say it is available, but it is not available as much as it is available in cities. Like cities pe you will get almost in every 2 to 3 kilometers, but in villages you get it hardly after 5 to 6 kilometers. So you can write that, and आपको वापस से 5 to 6 lines लिखने हैं उसके ऊपर, so उसमें you can mention it. The next one is theater. Theater is available in both. Like villages, they hardly have one theater in one area, particular area, wherein in our areas we have almost 8 to 10 theaters. So ऐसे ऐसे करके नीचे जो सारे options दिए वो आपको सोचने हैं कि theater और अरे villages and city में available है या नहीं, and कौन से level पे है. Fine. Example of settlement patterns in Brazil. So as I said you earlier कि हम ये chapter में India and Brazil का human settlements देखेंगे. So now we will see the Brazil का human settlement. Fine. Figure 7.2a show the lowlands of Amazon River. Amazon River हम लोग ने last time पे देखा था, वहाँ पे population बहुत कम था, right? तो आज हम लोग उसका human settlement देखेंगे. In the figure 7.2a and b, you can see the images of two settlements in Brazil. One is from the Amazon River basin in Brazil, while the other belongs to the coastal area, which is of Sao Paulo. Observe the settlement patterns carefully and name the types of settlement. Write a comment on the density and types. So if you see figure 7.2a, you will see that there are hardly any few human settlements as compared to figure 7.2b. जो skin structure है ना बच्चा लोग, वो वहाँ का human settlement है. So if you see figure 7.2a, it's hardly in some parts. Like एक छोटा सा स्ट्रेट लाइन जैसा है उतना ही ह्यूमन सेटलमेंट है. wherein if you compare figure 7.2b, it is fully covered. Okay, so the earlier settlement in Brazil were formed by the settlers from Europe, mainly in the coastal areas. Now the settlement have developed and are densely populated. The major reason of development are as follows, right? That earlier if you see coastal areas में settlements जो थे वो basically यूरोप के थे, but now there are more like these coastal areas are fully developed and densely populated. तो ये development क्यों हुआ and इनका population कैसे बढ़ा वो हम लोग देखते हैं. Although the coastal climate is hot and humid and flat land is limited due to rugged topography, the region has a good water supply and a large number of natural resources. Example Sao Paulo. तो Sao Paulo ये जो सेकेंड इमेजेस है उसमें कैसा है बच्चा लोग, सी मैंने बोला कि जो सारे फैसिलिटीज़ या रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उस हिसाब से वहाँ पे पॉपुलेशन होता है. तो अभी यहाँ पे द क्लाइमेट इज़ वेरी हॉट एज वी डिस्कस्ड इन द लास्ट चैप्टर. राजस्थान में कंपैरेटिवली द पॉपुलेशन वाज लो एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स. वाई? बिकॉज द क्लाइमेट ओवर देयर इज़ वेरी हॉट. तो वाटर सप्लाई का इशू होता है एंड एवरी possible issues are there. Basically इतना facilities नहीं होता है. But if you see this example of Sao Paulo, the climate over here is hot and humid and land भी इतना available नहीं है, limited land available है. तो भी यहाँ का population अच्छे amount में है. क्यों? Because यहाँ पे water supply है and natural resources are available on a larger scale. So that is why the population over here is more.
Sao Paulo has extensive area and a rich soil which makes it ideal for growing coffee. कि यहाँ पे soil अच्छा है and that is suitable for growing coffee. It also has a large supply of natural minerals close by such as iron ore, and it also has a steady energy supply. ओके सो क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड है बट बाकी सारे फैसिलिटीज़ ज़्यादा है. इट हैज़ मोर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल लाइक आयरन ओर. The southeastern area has a good transport system as well. This makes the Sao Paulo area a nucleated settlement, and that is why it is called as a nucleated settlement. हम लोग ने ऊपर देखा nucleated मतलब क्या, कम जगह में ज़्यादा लोग रहते हैं. Rural areas such as the Northeast Highlands suffer from extreme droughts, which makes it difficult for practicing agriculture, and hence settlements are sparse here. Okay, rural areas में क्या है, since it is highland area तो वहाँ पे पानी की कमी कम है, like पानी, water is not available, and that is why agriculture is not possible there, and food फिर available नहीं होता है, and that is why the population over there is sparse or less. Settlements become sparse as we move in towards the central part of Brazil. तो वापस सेंट्रल पार्ट का अगर हम लोग देखेंगे ब्राज़ील का तो वो वापस कम हो जाता है. गिवन आर द मेजर रीजंस के वाई कम हो जाता है. फर्स्ट वन, एरिया इज़ कवर्ड बाय थिक डेंस इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट. बच्चा लोग जहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा अवेलेबल होगा, मतलब जहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा होगा वहाँ पे क्या होता है, अवेबिलिटी ऑफ वुड ज़्यादा हो गया, चलो एक बारी, बट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ कम होता है, अवेबिलिटी ऑफ फूड कम होता है. So that is again an issue, and that is why the population over there is sparse. The climate here is unhealthy and unfit for settlement, right? As I said कि climate का भी problem होता है because forest area है ना, so climate हो गया, food हो गया, and there are many such problems which occur in forest areas. Limitation on use and exploitation of natural resources. जितना natural resources वो particular forest या वो particular land पे available है उतना ही मिलता है. So limited natural resources and poor transport links, as I always said that transportation again becomes a huge problem. Now we will see now we will see the human settlements in India. अभी तक हम लोग ने ब्राज़ील का देखा. ये जो साओ पोलो एरिया है उसमें क्लाइमेटिक कंडीशन हॉट एंड ह्यूमिड है बट ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है. द सप्लाई ऑफ वाटर इज़ गुड, अवेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज़ गुड, ट्रांसपोर्टेशन इज़ अमेजिंग, एंड दैट इज़ वाई द पॉपुलेशन ओवर देयर इज़ more. Then we have seen the coastal regions and rural regions. Coastal regions पे it is limited because of availability of limited land, and we have seen in rural areas more of forest area is there, and that is why the population over there is less. तो इतना हम लोग ने अभी ब्राज़ील का देखा. Now we will see of India. Urbanization in India. The level of urbanization is measured in terms of percentage of urban population to total population. कि कैसे मेजर करते हैं, जो इंडिया का टोटल पॉपुलेशन है एंड उसमें से अर्बन पॉपुलेशन मेजर किया जाता है. So you see figure 7.1 is the trend of urbanization from 1961 to 2011. If you see it is continuously increasing. पहले 18 था 61 में, फिर after 10 years it was 18.2, which is a little growth. फिर तो if you see it is a big growth like 18 से 23, 23 से 25. So it is increasing. The urbanization is increasing years by years. Reading the graph in figure 7.5 below and read the graphs and answer the following question. What was the percentage in 61? It is 18.0. Sorry, it is, yeah, राइट साइड में लेफ्ट साइड पे वाई एक्सिस पे परसेंटेज दिया है. दैट इज़ इन 5 के रेंज में. तो ये पर्टिकुलर अमाउंट है वो दिया गया है. In which decade was urbanization the highest? It is in 2011, which is 31.2. In which it is lowest in 1961, which is 18.
What inference can you draw regarding the Indians' urbanization after reading this graph, that after every 10 years it is been increasing, right? Geographical explanation. It is clear from the above graph that the growth of urbanization in India has been slow. Yeah, it has been so slow, but it has been increasing. As I said earlier, कि 61 से 71 में इतना ज़्यादा नहीं है, it is only 0.2. बट फिर आप देखोगे तो बढ़ रहा है बट वो स्लो वे में बढ़ रहा है. The level of urbanization in India in 2011 was 31.6, which is quite low in comparison to the developed countries. So if you compare it with other countries, it is quite low. At the same time, the urban population is increasing. Expansion of the urban centers and emergence of new towns have played a significant role in the growth of urban population and urbanization in the country. Since population is also increasing, new towns, new areas are growing, and that is why the population, the urbanization in the country is growing. Urbanization has been more in the southern parts than in the northern part in India. Goa is the most urbanized state with 62% population living in urban areas. Delhi is more than 80% urban. In the state of Tamil Nadu, Maharashtra, Gujarat, and Kerala, urbanization is more. Himachal Pradesh, Jammu Kashmir, Uttarakhand, Bihar, Rajasthan are some of the states with low level of urbanization. So if you see, साउथ में हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा है, अर्बनाइजेशन ज़्यादा है, सॉरी, एज कम्पेयर टू नॉर्थ. एंड देन इन साउथ देर इज़ अ पार्ट, देर इज स्टेट कॉल्ड गोवा जिसमें ज़्यादा है, फिर दिल्ली में ज़्यादा है, फिर बीच का पार्ट देखोगे आप सेंट्रल इंडिया तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब में ज़्यादा है. बट कहाँ पे कम है? राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, यहाँ पे कम है. तो वाई, अगर आप ये सोचोगे कि ये सारे एरियाज़ में क्यों कम है, सो सी, जम्मू एंड कश्मीर इज़ अगेन लोकेटेड एट द नॉर्थ. सो वहाँ पे मे बी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, maybe climatic condition can affect the factors of urbanization and population as well. Population and urbanization, students, grow hand in hand, because population जहाँ पे है वहाँ पे urbanization होगा. तो आप लोग को पहले देखने का कि वहाँ पे population क्यों कम है. राजस्थान अगेन क्लाइमेटिक कंडीशंस के वजह से, बिहार, हिमाचल प्रदेश अगेन इट कैन बी बिकॉज ऑफ मे बी रिसोर्सेज और मे बी ट्रांसपोर्टेशन. सो वैसे आपको देखने का. नाउ वी विल सी अर्बनाइजेशन इन ब्राज़ील. के अर्बनाइजेशन इन ब्राज़ील हम लोग देखेंगे. लुक एट द टेबल ऑन फिगर ऑन पेज नंबर 49. It shows the growth of share of urban population in total population of Brazil. Draw a line graph of this table. Explain the graph carefully and answer the following questions. तो ऊपर हम लोग ने ग्राफ देखा इंडिया के लिए, या वैसे यहाँ पे they had given you the details. You have to draw the line graph ऊपर के जैसे, and then answer the question. What is the interval of the data? It is 10 years. As we have seen, हमारा 1961 से 71 क्यों था? बिकॉज अगर आपको याद है लास्ट चैप्टर में हम लोग ने देखा था कि हमारा पॉपुलेशन मेजरमेंट 61-71 10 ईयर्स में होता है, बट वो 1 ईयर के उसमें होता है. इफ़ यू रिमेंबर डू यू नो में हम लोग ने देखा था कि पॉपुलेशन कभी मेजर होता है आफ्टर एवरी 10 ईयर्स एंड इट इज़ एट द रेंज ऑफ 61, 71, 81. वेरिन अगर ब्राज़ील का आपको याद है तो वो भी 10 ईयर्स में ही होता था, बट इट वाज इन द रेंज ऑफ 80, 90, 2000. वैसे याद है आपको? डू यू नो में लास्ट चैप्टर में देखा था. सो दैट इज़ वाई इफ़ यू सी हमारे इंडिया का अगर आप देखोगे तो इट वाज गिवन एज 61, 71, बट यहाँ पे इट इज़ गिवन एज 60, 70, 80. रिमेंबर, समझ रहा है क्या बोलना चाह रही हूँ मैं. एंड द पॉपुलेशन इज एंड द परसेंटेज इज गिवन. तो आपको पहले ऊपर जैसा लाइन ग्राफ बनाना है एंड देन यू जस्ट नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन. So what is the interval? It is 10 years. In which period did urbanization occur rapidly? So if you see, the more of percent is 84.6, which is in year 2010. And then you need to analyze कि जैसे हम लोग ने इंडिया का देखा आफ्टर 10 years कितने अमाउंट में बढ़ रहा है, कैसा बढ़ रहा है, वो आपको बताना है.
Geographical explanation. Brazil is one of the few developing countries which is highly urbanized. Okay, कि वो developing country में से है, but ऐसी कम developed country है जिसमें से ये वाला ऐसा है जो fully urbanized है. Brazil's substantial urban growth process is unique and one of the underlying factors contributing to its present day rapid economic growth. कि उनका जो urban growth है वो unique है and that is why urbanization वहाँ पे ज़्यादा है. Today, about 86% of Brazil population lives in urban area, which is a good percentage. Definition of urban is not very clear in Brazil. In Brazil, rapid urbanization happened mainly in the south and southeast, with Sao Paulo emerging as a major metropolitan and industrial area. कि ये एक प्लेस है उसकी वजह से यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ ये प्लेस ज़्यादा अच्छे से डेवलप्ड हुआ in case of industries, in case of transport, in case of population. Looking at this growth in few parts of the country, the government is promoting Go West policy, which will reduce pressure on few areas where population is concentrated and will reduce regional imbalance in the country. Right? कि इसमें कैसे हो गया ये साओ पोलो जो प्लेस है यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होने के वजह से द गवर्नमेंट दे स्टार्टेड प्रमोटिंग गो वेस्ट के जो दूसरा एरिया है वेस्ट का एरिया है ब्राज़ील का वहाँ पे पॉपुलेशन लिमिटेड है तो वहाँ पे लोग जाना चाहिए वहाँ पे लोगों को प्रमोट कर रहे जाने के लिए सो दैट द पॉपुलेशन वुड बी बैलेंस. Study the choropleth map of Brazil showing the statewise urban population of Brazil and answer the following question. Choropleth map कहाँ पे है? Wait. Which state region in Brazil is the most urbanized and which state is the least urbanized? Observe the two satellite. ये देखो जो ऊपर हम लोग को दिया था ना सबसे पहले सैटेलाइट फिगर वैसा ही ये वाला भी है. डिस्क्राइब द सेटलमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू फिजियोग्राफी. देखते हैं हम लोग चलो. Colors of both. Compare the line graph shown in figure 7.5 and drawn by you for Brazil. Write 5 lines. वो तो आप लिखने वाले हो because question में दिया गया है. Make a short note on comparison. Yeah, you can even compare these two maps on the basis of location, pattern, types and density. कि 61 में यहाँ का पैटर्न कैसा था ब्राज़ील का, इंडिया का पैटर्न कैसा था वो. ठीक है. Now coming towards page number 50, we have this map of Brazil which shows percentage of urban population in the year 90. नहीं वो percentage बता रहा. फाइन 51 to 60 का कलर कैसा है. If you see 51 to 60 and 61 to 70 का कलर almost same है, so don't get confused. तो देखो 91 to 100 किस में ज़्यादा है पॉपुलेशन. इफ़ यू सी साओ पोलो जो हम लोग कब से देखते आ रहे, रियो डी जनेरो, एस्पिरिटो सैंटो एंड गोयास, यहाँ पे population is more, urbanization is more, it is 91 to 100. Then 81 to 90 is slightly pinkish, which is Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. ये सारे जो एरियाज़ है, माइनस जेरोस, मैटो ग्रोसो, ये सारे जो लाइट पिंक है दैट इज़ 81 to 90. Then if you see 71 to 80 is Mato Grosso do Sul, ये वाला जो प्लेस है. नेक्स्ट अप टू साओ पोलो रीजन के ऊपर जो है मैटो डो सूल. फिर गोयास के ऊपर टोकांटिस, ये सारे प्लेसेस में पॉपुलेशन 71 to 80 है. सो 81 एंड 90 वाला स्लाइट डार्क पिंक से लाइट पिंक है जो हम लोग ने देखा. मैटो ग्रासो है, माइनस गिरास है, पैराना है, सांता कटारिया है, रियो ग्रैंडो सूल, ये सब 81 to 90 में आते हैं. नाउ 71 to 80 इज स्लाइट पिंक विच इज़ मैटो ग्रासो द सोल, अमेजोनास, फिर
ओके, सो जो स्लाइट पिंक में आपको दिखेगा ना बच्चा लोग, वो अमेजोनस वाला जो कलर है वो वाला है. फिर अमप्पा ऊपर, अमप्पा वाला अगेन इट विल कम इन 81 to 90. पर यहाँ पे इफ़ यू कम टू राइट तो रियो ग्रैंडो नोटो है, एलेगोस है, परमैब्यूको है, ये सारे जो है दैट इज़ 71 to 80. एंड 61 to 70 एंड 51 to 60 इज़ स्लाइटली सेम. तो इसमें कंफ्यूज मत होना. देखो 61 to 70 वाला कौन सा आ जाएगा. इफ़ यू कम टूवर्ड्स द लेफ्ट कॉर्नर, एक्रे करके है, रोंडोनिया करके है, दैट इज़ 61 to 70 वाला कलर. फिर इफ़ यू कम टूवर्ड्स राइट, ब्राज़ीलिया के ऊपर देखो बहिया है, सरगाइप है, फिर उसके ऊपर सियारा है, ये सब 61 to 70 वाले कलर रेंज में आ जाएंगे. एंड 51 to 60 इज़ दिस एकदम लाइट पिंक जो आपको दिख रहा है, परा, मरानहाउ एंड पियाऊ, ये 3 इसमें आ जाएंगे 51 to 60. समझा मैप रीडिंग. Which factors have affected urbanization in Brazil? So again you need to do a bit of research कि ये सारे places में क्या क्या problem है. Maybe because of climatic condition, transportation या natural resources या availability of water supply. तो वो सब आपको देख के फिर आपको factors निकालना पड़ेगा कि क्यों 91 to 100 वाले places में ज़्यादा urbanization है and क्यों 51 to 60 वाला जो percentage है उसमें कम urbanization है. Okay. Geographical explanation. As you can see from the map, urbanization has occurred more in the coastal states than the states in the interior of the country, right? कि interior में आप देखोगे तो hardly 51 to 60, 61 to 70 ही है. But if you see in the coastal areas, वो ज़्यादा करके 81 to 90, 91 to 100 वाला percentage में है. States like Sao Paulo, Goiás, Minas Gerais have more urban population than states in north, right? कि ये सारे places पे ज़्यादा population है. As population is less in Amazon basins and Brazilian highlands, urbanization is also less. As I said कि जहाँ पे आपको कभी भी urbanization देखना होगा तो आप population देखना, क्योंकि urbanization वहीं पे होता है जहाँ पे population ज़्यादा होता है. That is directly connected. In this part, Manaus is a port of the confluence of the Negro and the Amazon. Urbanization has occurred here. कि Manaus अगर आप देखोगे, Manaus कहाँ पे है बच्चा लोग, इट इज़ ब्राज़ील जहाँ पे लिखा है, तो ब्राज़ील का जो ए है हाईलाइटेड उसके ऊपर ही है. जस्ट देखो मनाउस, वो कौन से कलर में आता है, इट इज़ इन द कलर 71 to 80. तो ऑलमोस्ट 80% टाइप ऑफ पॉपुलेशन वहाँ पे है. सो अर्बनाइजेशन थोड़ा थोड़ा वहाँ पे अकर हुआ है. वाई? बिकॉज वहाँ पे नेग्रो लोगों का ज़्यादा पे रहना है वैसा. ठीक है. एंड दी अमेज़ॉन, के अमेज़ॉन वाला भी जो पार्ट है वहाँ पे भी वैसा ही है. ठीक है. Colors of both. Write a paragraph on the settlement pattern, urban and rural settlement and urbanization in India and Brazil. तो सेम जब आप ये छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर्स दोगे ना, उसी में ये सारा क्वेश्चन आ जाएगा कि वाई डू यू फील कि अर्बनाइजेशन में पॉपुलेशन ज़्यादा है, रूरल में पॉपुलेशन क्यों ज़्यादा है, वैसे. So yeah, that is how we have come towards the end of our chapter. I hope you have understand कि कैसे population and urbanization एक साथ directly connected है and how it affects human settlement, right? Main कहाँ कैसे होता है बच्चा लोग, जहाँ पे facilities ज़्यादा है वहाँ पे population ज़्यादा है, because everyone wants to live a proper lifestyle वाला life, right? No one wants to compromise or no one wants to suffer basically, and that is why they select a place which is highly facilitated with every aspects, then be it electricity, water supply, natural resources, food supply, everything. Okay. So yeah, that is how we come towards the end of our chapter. I hope you have understood everything. We'll see you all in the next one. As I always say, exercise would again be your homework. So yeah, we'll see you all in the next one. Till then, bye bye and take care. Bye.